everyone. This is class 7 of my free series of paper 2 library science UGC NET and SET exam. Uh, in today's class I will be covering few important concepts related to the exam. Okay, so there are mainly the major concepts of censorship, internet censorship, and information system, as well as economics of information, etc. Okay, so without any further delay, let's get started. So basically, what is censorship? Okay, censorship क्या है ये समझना ज़रूरी है ना. सेंसर, ओके, सेंसर से हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सेंसर मतलब कोई भी चीज़ है उसको सेंसर कर देना, मतलब प्रोटेक्ट कर देना ना, रेस्ट्रिक्ट कर देना. ओके, so ALA, this definition is very important regarding the exam purposes. Okay, this is the definition. ALA defines censorship as the suppression of ideas and information that certain persons, individuals, groups or government officials find objectionable or dangerous. तीन चार टर्म जो इम्पोर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज सप्रेशन ऑफ आइडियाज़. क्वेश्चन पूछा जाता है कि who said or who defined censorship as the suppression of ideas. ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. देन द थर्ड और सेकेंड और थर्ड कीवर्ड इज ऑब्जेक्शनेबल एंड डेंजरस. सो ALA डिफाइन censorship as the suppression of ideas and information that certain persons, individuals, groups or government officials, it may any of them, okay, they find it objectionable or dangerous. Then they incorporates the censorship. So censorship can be applied to numerous things like books or other print materials, as well as speech, whoever is saying something. Then it may also be applied to photographs, films, television programs, radio programs, digital materials, and the most important, the internet. Okay, we can understand and that if censorship has been applied to a book or other printed materials, the publication of that particular book or print materials will not be done, right? We have seen so many examples in our country and in foreign countries too. कोई भी एक प्रिंटेड मटेरियल है या कोई भी एक बुक है, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि इट इंक्लूड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मे बी हार्मफुल टू ए सोसाइटी और दैट मे बी डेंजरस टू ए सोसाइटी इन रिगार्डिंग मैनी एरियाज. सोसाइटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. देन कम्स स्पीच. कोई भी आके कुछ बोल रहा है, दैट हमारे देश में क्या ना कि स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन देयर शुड बी ए लिमिट. ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ बोल सकता है. मान लीजिए मैं ऐसा कुछ बोल दिया कि जो जाके एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इसीलिए सेंसरशिप स्पीच पे भी लागू हो सकता है. देन फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, कॉन्सेप्ट सेम ही है, सारा चीज़ों के ऊपर भी ये लागू हो सकता है. दिस इज़ द कोर कॉन्सेप्ट दैट सेंसरशिप कैन बी अप्लाइड टू दिस थिंग्स. ओके, नाउ these can all be censored for any number of reasons. like political reason हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का कोई चीज़ है उसके ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया, या फिर कोई स्लोगन है, या फिर कोई रैली है, ठीक है, कोई पोस्टर है. देन सोशल रीजन्स हो सकता है, रिलीजियस रीजन हो सकता है, रेसिस्ट रीजन हो सकता है, जो है हम लोग का अमेरिका में ये ज़्यादा है. देन कम्स द मोरल रीजन्स. सिक्योरिटी कॉन्शियस हो सकता है. ओके, सिक्योरिटी कॉन्शियस में क्या होगा कि मान लीजिए हमने एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो बहुत ही सिक्योर है, मतलब जो बहुत ही सेंसिटिव है. फॉर एग्जांपल, आई हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री. सो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास होगा तो क्या होगा, सिक्योरिटी कॉन्शियस आएगा. देन द इंफॉर्मेशन शुड बी सेंसर्ड, राइट? सो now coming to the library ethos versus censorship. As a librarian, what do we expect? Okay, what do we expect that our ethos or our ethics and censorship, what we should do and what we should not do
what we should omit. Okay, censorship is not only banning books or any printed materials, or limiting search accessing or accessing websites. We'll be discussing in the internet censorship section. Okay, it is not like that. ঠিক আছে, কি censorship or librarian, both of them are the same, the both the two different parts of a same coin. Okay, एक पार्ट में क्या होता है, लाइब्रेरियन होता है, दूसरा पार्ट में सेंसरशिप होता है. लाइब्रेरियन के पास सारा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा वगैरह है. दूसरा पार्ट में क्या है, सेंसरशिप है. मान लीजिए कोई एक आके मुझे बोल रहा है कि सर आप ये बुक उसको नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकता हो? क्योंकि इस बुक में ये इन्फॉर्मेशन है जो उसके लिए अच्छा नहीं है. सो क्या होगा कि लाइब्रेरियन को डिसाइड करना पड़ेगा कि बायस्ड, विदाउट एनी बायसनेस, सोसाइटी को देख के, जान के, फिर एनालाइज करके उसको डिसाइड करना है कौन सा इन्फॉर्मेशन किसको देना है. राइट इन्फॉर्मेशन, राइट पीपल एट द राइट टाइम. ओके, अब लाइब्रेरीज क्या बिलीव करता है कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होना चाहिए. देयर शुड बी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. एवरीथिंग शुड बी डिसेमिनेटेड to the needy people, right? So what it means, it means every individual should have the right to read, learn and access information. Okay, so this is the thing. Now इफ्ला का एक कमिटी है जिसका नाम है FAIFE, that is freedom of access to information and freedom of expression. FAIFE, freedom of access to information एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन होना चाहिए. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये. फिर द मोस्ट प्रोएक्टिव इन द एरिया ऑफ सेंसरशिप इज दैट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन. ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप द ऑफिस ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. Important. Office of Intellectual Freedom was set up by American Library Association in the year 1967. ठीक है, ओके, ठीक है. नेक्स्ट, सिलिप हमें आता है कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और सेंसरशिप का एक स्टेटमेंट डाला. ठीक है, हैज़ इशूज इट्स ओन स्टेटमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड सेंसरशिप इन द ईयर 2005. सिर्फ इतना याद रखना है हमें. Now, there are two types of mainly censorship. The first one is regulative censorship, which is incorporated by a corporate body or a government body or any kind of authority. Okay, and the second one is constitutive censorship. It covers the whole thing. Okay, it influences what is considered acceptable. It also influences what is not considered acceptable at all in the society. ठीक है. रेगुलेटिव सेंसरशिप में क्या होता है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस. जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट मे बी गवर्नमेंट, इट मे बी प्राइवेट, इसका जो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस है, इसके ऊपर बेस्ड है रेगुलेटिव सेंसरशिप. देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ऑथोराइज्ड बॉडीज और गवर्नमेंट एजेंसीज, एंड इट फोकसेस ऑन रेस्ट्रिक्टिंग और प्रोहिबिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और कॉन्टेंट. ओके, किसमें फोकस ज़्यादा है इसका कि एक्सेस ना दो इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्सेस ना नहीं देना चाहिए. ठीक. देन कॉन्स्टिट्यूटिव सेंसरशिप, इसमें क्या है, इट शेप्स आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड परसेप्शंस. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जहाँ पर भी आइडिया का बात आएगा उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव सेंसरशिप का नाम आएगा. ठीक है, वर्क सप्ली थ्रू कल्चर, एजुकेशन, मीडिया एंड सोशल नॉर्म्स एक्सेट्रा इसके अंदर आता है, इसके इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूटिव सेंसरशिप में. नाउ it is not like that censorship is only not practiced through the exclusion of certain materials, but may also take place after the material has been acquired by the LIC. Here LIC is not the insurance one, it is the Library and Information Center. Okay, LIC means. Now what happens is, for example, a library has purchased a book. ठीक है, now later क्या होता है कि कोई आके कंप्लेन करता है कि ये बुक नहीं लेना चाहिए, इसको हटा दो, आप लाइब्रेरी में नहीं रख पाओगे. ठीक है, ठीक है. देन व्हाट द लाइब्रेरियन डज, और द व्हाट द MC और मैनेजमेंट कमिटी और द बुक सिलेक्शन कमिटी, व्हाट दे डज, द लाइब्रेरी रिमूव्स द बुक. राइट, दिस इज ऑल्सो सेंसरशिप.
ठीक है. So libraries generally try to satisfy all users rather than any particular group. ठीक है. लाइब्रेरी का काम ही यही है कि आपका जो भी ग्रुप है, मान लीजिए कोई एकेडमिक लाइब्रेरी है तो एकेडमी से जुड़ा हुआ जो लोग हैं, जो पैट्रन्स है, वही आएगा लाइब्रेरी में सर्विस लेने के लिए. सो विदाउट एनी बायसनेस, without any credentials, we have to, or the librarians have to satisfy all the users. Okay, that is the intellectual freedom. ठीक है. Now there is a thing that Galileo Galilei and Darwin, इन दोनों का स्टोरी हमें पता होना चाहिए. आई होप कि आप सबको पता है ऑलरेडी, फिर भी आई एम रिपीटिंग कि सिर्फ जो सेंसरशिप है लिटरेचर या कोई रिसर्च, पर्टिकुलर कोई रिसर्च एरिया में लिमिटेड नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द दैट इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू साइंटिफिक राइटिंग्स टू. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 1633 Galileo, he was jailed due to his discovery that Earth revolves around the sun. So what the Pope Francis or the what they did was they did not accepted Galileo's discovery, and later on they jailed him, right? So the main problem is they censored Galileo. This is the core thing. They censored Galileo that because his information or his knowledge or his discovery should not come to the society. They thought that. They thought that this information will affect the society in some parts. That is why they censored Galileo. Same concept same goes for Darwin too. Darwin's books, it was also banned in the USA, right? So now the very important thing, that is internet censorship. What is internet censorship? Censorship, I hope it's clear right now. So internet censorship is nothing but limiting or restricting the internet or internet uses. It may occur in three levels. It may be, there may be multiple levels, but mainly there are three levels. That is those are national or state level, organizational level, and library and information center or LIC level. So the first one, national and state level में इसमें क्या होता है? The government, they block the websites or remove online content. If they find any information that is harmful, that is objectionable to the society, so what they does, they just block the websites or blocks the source of the information. Okay, now the organization level, any kind of institution, they have their access to the information and they just block it. So it happens from an organizational level. And library and information center में क्या होता है? LIC level, libraries regulate users access to online resources. इसमें क्या होता है? मान लीजिए you are sitting in a library and what you are doing, you are watching a movie in YouTube in the library. It's digital section. Okay, so the librarian has the access. Okay, what he will do or what she will do, he will simply block the IP block कर देगा. This is not acceptable. अभी this is we are living in moderate libraries or डिजिटल लाइब्रेरीज, हाइब्रिड लाइब्रेरीज. इसमें क्या होता है, अलाउ होता है कभी कोई लाइब्रेरीज में, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या है कि दिस इज़ नॉट अलाउड. ओके, सो इसमें इसलिए क्या किया जाता है, IP को ब्लॉक कर दिया जाता है. ठीक है. सो इंटरनेट सेंसरशिप इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स. Any kind of content that is obscene or objectionable, harmful to public order, a threat to national security, it will be removed from the source. Okay, so now content control software, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके they restrict or regulate the use of or the access of internet. इसमें 3-4 तरह का फिल्टर्स होता है. फॉर एग्जांपल ब्राउज़र बेस्ड फिल्टर्स, इट वर्क्स विद इन ए वेब ब्राउजर्स. देन प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल फिल्टर्स, फिल्टर कंटेंट थ्रू नेटवर्क सर्वर्स और फायरवॉल्स. इसमें फायरवॉल यूज़ किया जाता है, जैसे शिप बुलेट हो गया.
ठीक है, ये सब यूज़ किया जाता है इसको फिल्टर करने के लिए। क्लाइंट साइड फिल्टर्स में क्या है, इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। आप एक क्लाइंट हो, होस्ट कोई और है, ठीक है, सो वो आपको कंट्रोल कर रहा है ना, उसके पास ये कंट्रोल है। नेक्स्ट, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर लेवल फिल्टर्स, it is implemented by ISPs. They filters the content you are watching, they filters the content you are accessing or you are searching or you are querying. Okay, now all apart from all these things there is a concept of self censorship. आप कौन सा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप कौन सा इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, you are accepting. So self censorship, as mentioned earlier, comes into play in the context of internet access also. This relates the extent and type of filtering to be used. This is completely and particular human to human dependent. Okay, now another important thing, that is that 404 day 404 error, we all know that, right? So the very important thing, that is 404 day, a day of action against censorship in libraries. So this is very important. कभी भी आ सकता है एग्जाम में वन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। 404 डे, ए डे ऑफ एक्शन अगेंस्ट सेंसरशिप इन लाइब्रेरीज। इसमें क्या होता है क्या हुआ था ऑन अप्रैल 4, 2014, ठीक है, EFF इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन along with the MIT Center for Civic Media and National Coalition, what they did, they organized a digital tech for library personnel to understand and learn more about the use and applications of internet filters. इंटरनेट फ़िल्टर यूज़ करके कैसे और ज़्यादा सेंसरशिप को यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया था ऑन दी 4th April of 2014, and the day 404 day, a day of action against censorship in libraries. This is very important. Okay, now there is a thing, that is ISO 9001. Okay, this is organized, it states that the necessity to establish a documented procedure to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval and retention, and stresses the need for records to be legible and readily identifiable and retrievable. मतलब क्या है कि डिजिटल एनवायरनमेंट में कोई भी रिकॉर्ड है उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रिट्रीव करना, देन उसको रिटेंट करना, सारा जो है इसमें आता है। कौन सा स्टैंडर्ड है, ISO 90001। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ISO 90001, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। नाउ economics of information. So now we move to the second part, that is information that is no longer just a knowledge. Today it is also an economic resource, right? पहले क्या होता था, कोई भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी क्या करते थे, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस कि जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो आगे है हम सबसे, सो देयर इज़ ए कॉम्पिटिटिव नेचर using the information, right? So the very thing, that is economic resource or as information, इसमें क्या है, what does it means? It means that we can use information as a source of economic benefit. Okay, we all know that information has always been a valuable asset, right? Today, nowadays, information is often kept confidential because it provides a competitive advantage. जिसके पास इंफॉर्मेशन है तो ज़्यादा आगे है। फॉर एग्जांपल, फिशरमैन यूजिंग GPS एंड सैटेलाइट डेटा। एक फिशरमैन हर दिन उसको बहुत ज़्यादा फिश मिलता है, क्यों, वाई? देन वी फाउंड दैट ही यूजेस GPS एंड सैटेलाइट डेटा, सो वो उस लोकेशन पे ही जाता है जहाँ पर ज़्यादा फिश मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, दूसरों के पास नहीं है। एक लाइन है कि ऐसा नहीं होगा कि इन्फॉर्मेशन या सीखने का तरीका
ये मतलब इसके ऊपर काम नहीं होगा, या फिर डेटा नॉलेज इंफॉर्मेशन ये सब कम नहीं होगा, कम ये होगा कि कैसे सीखना होगा, हाउ यू विल लर्न, इसमें कमी आएगी। एक लाइन था किसी का। सो फिशरमैन के पास जीपीएस है, सैटेलाइट डेटा है, इसके लिए उसके पास एडवांटेज है, राइट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। So basically these economics of information, then comes the branches of economics. It is mainly divided in two branches. First one is microeconomics and the very second part, that is macroeconomics. So what is microeconomics? It studies individual behaviors, households, farms, लिमिटेड स्कोप है इसका, ठीक है, लिमिटेड स्कोप। इसमें क्या होता है, ये क्या क्या यू स्टडी करता है, इसको इंडिविजुअल स्टडी करता है हाउस होल्ड एंड फार्म्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ओवरऑल एज ए होल स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा इसके अंडर में आता है। सो इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स अंडर ओके, बताओ कम्स अंडर माइक्रो और मैक्रो। Obviously it will become under the macroeconomics, right? So information economics is a branch of microeconomics that studies how information and information system influence economic decision as well as market performance. इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, अभी मैंने बोला, ठीक है। एंड इट स्टडीज हाउ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम दे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस एंड मार्केट परफॉर्मेंसेस। इकोनॉमिक डिसीजंस में बहुत कुछ है, इसमें इसके ऊपर मार्केट परफॉर्मेंसेस डिपेंडेंट है। मान लीजिए मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा स्टॉक आज ज़्यादा ग्रो करेगा या कौन सा स्टॉक का ज़्यादा गिरने का चांसेस है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा डिसीजन ले पाएगा, अच्छा डिसीजन ले पाएगा, उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्मेंस उसका बेहतर होगा या तो ख़राब होगा, राइट। सो स्टिग्लिट्ज़ व्यू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इधर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मार्केट्स डू नॉट ऑलवेज हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन्होंने ये बोला था दैट मार्केट्स डू नॉट ऑलवेज हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जिसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, उसके पास क्या होगा, मार्केट परफॉर्मेंस उतना बेहतर होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफन कॉस्टली टू ऑब्टेन। ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ कॉस्टली होता है। मेनी मार्केट प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट और अनइक्वल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि मान लीजिए बाद में शायद है, देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सो मान लीजिए आपके पास एक ब्रोकर आया है, ही इज़ हेल्थ इंश्योरेंस ब्रोकर। सो he knows more information, he has more information on the schemes or health insurances than you. Obviously that is why he is the broker. And if you are a librarian and a patron comes to your library, so definitely you have the more information in competing with the patron regarding your library, right? So this is what is information asymmetry. It occurs when one party has more information than the other, right? Another important thing, that is signaling theory. माइकल स्पेंस इंपॉर्टेंट है ये नाम, माइकल स्पेंस का सिग्नलिंग थ्योरी। इसमें क्या है कि पीपल सेंड सिग्नल्स टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन गैप्स, ठीक है। क्या है इसमें, एम्प्लॉयर्स जिसके पास ज़्यादा डिग्री है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, जिस एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा डिग्री है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, नेचुरल है ये। जिसके पास कम डिग्री है उसको कम पैसा मिलता है, ग्रेड कम हो जाता है, राइट। So educational qualification signal skills to employers. आपका जो educational qualities है, qualifications है, these are the signals. इसमें क्या होता है कि ये employers जो आपका hiring authority है उसको signal मिलता है कि आपके पास ये knowledge है, ये नहीं है, right? So this is what is signaling theory. Game theory nowadays it is widely people are working on this very concept. They are researching on this very concept of game theory. It is a part of microeconomics, okay. It studies strategic decision making. This is the important thing. Earlier on we have learned that how information systems or it affects the economic decisions, right, and the decisions affect the market performances. So what game theory does, it studies
the strategic decision making. So it is very important. If someone is helping you in the decision making, then you can easily have some more effect or impact in the market, right? So it is used to analyze situations with complete or incomplete information. Complete information, incomplete information है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक सिचुएशन है, जैसे आपके पास उस चौड़ाई के पार क्या है आपको नहीं पता है. दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, सीधी सी बात है, राइट? So now coming the another important thing, that is the impact of digital technology on encyclopedia industry. ओके, ट्रेडिशनली क्या होता था, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का जो इसका प्रिंटेड वर्जन मिलना भी बंद हो चुका है, राइट? सो इसका इनिशियल प्राइसेस क्या था, $1500 to $2200. देन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स्ट्रा $200-300 लग जाता था. देन कम्स द माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा CD ROM, जिसका प्राइस क्या था, अराउंड $50, और इसको ज़्यादातर फ्री मिल जाता था PC के साथ, ठीक है? सो इसमें क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा का सीधा सीधा लड़ाई था किसके साथ, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के साथ. देन ग्रेजुअली ब्रिटानिका सेल्स डिक्लाइन शार्पली and they shifted its business to the internet later on. Okay, now we all know what is information. If we have data and we have comprehended some meaning from the data, then it becomes information, right? So it is very difficult to define information because it changes section. For example, cataloging एक लाइब्रेरियन के लिए जो डिफाइन करेगा या जो डिनोट करेगा, इट मे नॉट डिनोट द सेम थिंग टू ए पर्सन हु इज सेलिंग एन ऑब्जेक्ट इन ए शॉपिंग मॉल. वहाँ पर भी तो कैटलॉग होता है ना, वहाँ पर भी तो कैटलॉगिंग होता है. सो दिस इज द थिंग दैट इट इज़ एसेंशियली डिफ़िकल्ट. एक मिनट, so it is essentially difficult to define information, right? Because it changes its meaning, right? So information system, this is a collection of technical and human resources. टेक्निकल में क्या आएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों आएगा. ओके, एंड अनदर इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज़ नेटवर्क इफेक्ट्स. नेटवर्क इफेक्ट्स में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विस, इसको वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है जितना पे. कॉन्सेप्ट है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना? आप में से दो में से दो और, राइट? सो क्या होगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो द थिंग इज़ वेरी गुड. ये दो यूज़ करें तो और वेरी गुड, ये दो यूज़ करें तो और वेरी गुड, राइट? हम सब कैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है. मान लीजिए शाहरुख खान आगे टीवी पे कोई ऐड दे रहा है ना, दिस प्रोडक्ट इज़ गुड. सो व्हाट विल डू और व्हाट विल वी बिलीव दैट दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी और एक्चुअली गुड, राइट? So this is what is network effects. It refers to the effect whereby goods or service become more valuable when more people use it. ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा. जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ है उसमें जो चीज़ मिल रहा है वो अच्छा ही होगा. ओके, दिस कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क इफेक्ट का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था. ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय बेल टेलीफोन इन द अर्ली 20th सेंचुरी. अर्ली 20th सेंचुरी का शुरुआत में बेल टेलीफोन द्वारा नेटवर्क इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया था. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड about the economic parts of information. Now coming to the third part of today's class, that is information as a commodity. Basically what is commodity? Commodity क्या है? Particular thing that you can share, you can use, or it should have some kind of value, right? For example, it may be your time, it may be your watch, it may be the water you are drinking, right? So information कब से commodity हो गया? Information as a commodity. Information obviously has economic value. Information use करके people क्या कर रहे हैं? They are profiting, they are getting paid because they have certain information in their mind, right? So it can be exchanged or licensed and differs from physical goods. अब physical goods क्या है? मान लीजिए कि you want to hire a librarian, okay, or you have DDC,
right? You have DDC. And the second aspect is you want to hire a librarian. So what is the need of hiring a librarian when you have already you have the DDC? So there is a difference between the physical good and the human good, because he himself is the information community, right? So he differentiates from the physical good, that is DDC, right? So information community का characteristics क्या क्या है? It is intangible in nature, it exists as ideas or knowledge, or it may be recorded on media like paper, CD, digital files, etc. Okay, now coming to the very interesting thing, that is ownership and possession. मुझे पता है कि LIC, मैंने अभी बोला कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, नॉट द इंश्योरेंस कंपनी. आई नो दैट एवरी वन नोज इट. सो क्या है कि मेनी पीपल हैव द सेम इंफॉर्मेशन, राइट? सो सेलिंग इंफॉर्मेशन डज नॉट रिमूव इट फ्रॉम द सेलर. मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, मेरा कोई कमी नहीं हो रहा है ना, राइट? मुझे और सीखने को मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, आई होप सो. नहीं मिल रहा है तो और भी बेहतर है, मिल रहा है तो और भी बेहतर है, राइट? सो डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल गुड्स, ये मैंने अभी बोल दिया. लेकिन वी हैव ऑल्सो वी कैन मेक द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी एज कमर्शियलाइज गुड, वी कैन कमर्शियलाइज इट. ओके, एंड देयर आर फ्यू चैलेंजेस. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली कॉपीड. ओके, कॉपीराइट आ जाएगा, पहले हमने डिस्कस किया है कॉपीराइट के बारे में. देन रिस्क ऑफ अनऑथराइज शेयरिंग और लीकेज एंड लीगल प्रोटेक्शन, ये सब इसमें आ जाएगा. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज हेलन क्लेवेलैंड. हेलन क्लेवेलैंड में 1982 में ही हैज़ आइडेंटिफाइड 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हेलन क्लेवेलैंड 1982 में उन्होंने क्या किया था, 6 इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट किया था, डिफाइन किया था. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन इज एक्सपेंडेबल. इसमें से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये था या नहीं था. फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट डाल दिया, इंफॉर्मेशन इज एक्सपेंडेबल, इंफॉर्मेशन इज कंप्रेसिबल, इंफॉर्मेशन इज सब्सटीट्यूटेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल. ये चार्ट डाल दिया, ये दोनों नहीं डाला, ठीक है? ऑप्शन दिया जा सकता है कि डिफ्यूजिव था या नहीं, शेयरेबल था या नहीं. सो दिस 6 टर्म्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट. इंफॉर्मेशन के एक्सपेंड किया जा सकता है. मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको उसमें उसके ऊपर और कुछ जानना है, आप जान रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर. सो इट मे बी एक्सपेंडेबल. इंफॉर्मेशन इज़ कॉम्प्रेसिबल. फॉर एग्जांपल कोई अभी क्या है, इसमें एक ऑप्शन की जेमिनाई नोट्स करके. सो ये जो क्लास जा रहा है अभी, इसका ऑटोमेटिक नोट्स आ जाएगा, ऑटोमेटिक सम अप जिस्ट करके. सो पूरा क्लास का एक कॉम्प्रेस करके इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है. सो information is compressible, and information is also substitutable. We can substitute the information with the more acceptable one, जो ज़्यादा acceptable होगा, right? So there are 6 main characteristics of information. सारा important है, अच्छे से देख लेना. It is expandable, it is compressible, it is substitutable, transportable, diffusive, and last but not the least, it is shareable. Okay, so यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, मैं अभी सिर्फ ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है? ये इधर आओ. एप्सको पब्लिशिंग, एप्सको का डेटाबेस कौन सा है? एकेडमिक सर्च, एज लाइन, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइंड हेल्थ. सिर्फ इतना. एप्सको का कितना है डेटाबेसेस? एकेडमिक सर्च, एज लाइन, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइंड हेल्थ. देन प्रोक्वेस्ट का एरोस्पेस एंड हाई टेक्नोलॉजी डेटाबेस, अनलिस्टेड पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ये हम सबको आता है ना. दिस लिस्ट इज़ नॉट लिमिटेड और नॉट कंप्लीट. दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. अभी हमने पढ़ाई किया ना कंप्लीट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में. सो दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. यू हैव टू ब्राउज द वेबसाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउसेस और कॉर्पोरेट बॉडीज़. ओके, और कोई है तो अच्छे से देख लेना. फॉर एग्जांपल थॉमसन डॉटर्स का कौन सा है? वेब ऑफ नॉलेज, द जूलॉजिकल रिकॉर्ड, एटसेट्रा. एल्सेवियर का साइंस डायरेक्ट है, स्कोपास है, हमें सब पता है ना. जेस्टोर का जेस्टोर है, जर्नल स्टोरेज एक है. स्प्रिंजर लिंक है, स्प्रिंजर का. फ्री डेटाबेसेस कौन सा है? आर्सीव हमें आता है, दुआज हमें आता है ना. मेंडली है, पबमेड है, पबकेम है, गूगल स्कॉलर है. दिस आर द फ्री. ओपन एलेक्स है, दिस इज़ द लेटेस्ट वन, ओपन एलेक्स. इसमें मतलब इट हैज़ मोर देन द स्कोपस डेटाबेस. ओपन एलेक्स. डायमेंशंस है,
Dimensions AI, this is also important. So these are the free और open access databases. इसमें आप सबको काम करना पड़ेगा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा डायरेक्टरीज है, कौन सा डेटाबेसेस है, ये आप सबको देखना होगा. इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, नाउ okay, so basically we have concluded this today's theory class. Okay, so basically what we have learned, I'm just summing up in 1 minute. So basically we have learned about censorship. This definition is very important. So censorship as a suppression of ideas, किन्होंने बोला था, ALA बोला था. Okay, so censorship can be applied to these things, right? Books, speech, photographs, etc. Then this can be censored for any number of reasons. There are numerous number of reasons you can say. देन लाइब्रेरी थॉट्स और सेंसरशिप में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या बायसनेस आ जाता है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया था उसके बारे में डिस्कस किया. देन फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सेंसरशिप में क्या क्या है, 2 तरह का है, रेगुलेटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव, इसके बारे में डिस्कस किया. देन what we learned about is internet censorship, and before that we have learned about the very two concepts or very two information about 2 incidents, right? गैलीलियो का इंसिडेंट और डार्विन का इंसिडेंट, उन दोनों को सेंसरशिप किया गया था, सेंसर किया गया था, राइट? सो देन वी लर्न अबाउट द इंटरनेट सेंसरशिप. इंटरनेट सेंसरशिप का 3 लेयर होता है और 3 लेवल होता है, नेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और LIC लेवल. देन सॉफ्टवेयर यूज़ करके, फाइल यूज़ करके, या फिर कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैसे सेंसर किया करता है कोई यूज़र को, राइट? देन वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द सेल्फ सेंसरशिप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट concept of 404 day, that is the day of action against censorship in libraries, right? Then we have learned about ISO 9001. Then I have discussed about the economics of information, how information has become economic value or economic commodity, right? So then we have discussed the 2 branches of economics, that is microeconomics and macroeconomics. Okay, सो इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में ये स्टिग्लिट्स का व्यू, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. उन्होंने क्या किया था, जिसका ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा, जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ होगा उस दुकान का प्रोडक्ट अच्छा है. दिस इज़ द कोर कॉन्सेप्ट, राइट, स्टिग्लिट्स का व्यू का. देन एस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के बारे में हमने डिस्कस किया. क्या है इसमें, कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस ब्रोकर आया है आपके पास, सो डेफिनेटली ही हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंसेज रादर देन यू. और आप एक लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल हैव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट DDC और UDC और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग rather और comparing to a general pattern, right? So we have also learned about the signaling theory. व्हाट इसमें क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, उसको ज़्यादा पैसा मिलता है ना, ज़्यादा पे लेवल मिलता है. दिस इज़ द थिंग. इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स ऑफर हायर सैलरीज बेस्ड ऑन दिस सिग्नल्स. इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को सिग्नल माना जाता है, एम्प्लॉयर को सिग्नल आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, इट वर्क्स लाइक सिग्नल्स. देन वी हैव आल्सो लर्न द गेम थ्योरी, व्हाट इट वर्क्स इन द एज अ सब पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, right, microeconomics. Then it studies the strategic decision making. It helps you to conclude the decisions, right, so that you can have the more effect to the society. Okay, so and we have also learned about or we have seen the impact of digital technology or CD-ROM, that is Microsoft Encarta. This particular incident is important, that is why I have included this thing. Okay, Microsoft Encarta versus Encyclopedia Britannica. Then we have also learned about the information system or information. Then we have also learned about the very term of network effects, right? इसको किन्होंने डिफाइन किया था, किन्होंने प्रेजेंट किया था, बेल टेलीफोन ने, कब, अर्ली 20th सेंचुरी में. ठीक है. देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम ए कमोडिटी. ठीक है. सो देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. किन्होंने डिफाइन किया था, किन्होंने डिस्कवर किया था, हार्लैंड क्लेवेलैंड में 1982 में. देन डेटाबेसेस के बारे में थोड़ा सा है. नाउ कमिंग टू टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू विल पार्टिसिपेट. ओके. So according to, this is an assertion reason statement based question. So the assertion is, according to IFLA libraries must support freedom of access to information and reject censorship. Reason क्यों दिया गया? Because libraries have unlimited information. Okay, बताओ क्या होगा आंसर? What will be the answer? According to IFLA libraries must support freedom of access
इफ्ला के हिसाब से लाइब्रेरी को फ्रीडम ऑफ एक्सेस सपोर्ट करना चाहिए, इसमें इंफॉर्मेशन को ज़्यादा मतलब कि एक्सेस मिलेगा, एंड इनको लाइब्रेरीज को सेंसरशिप को रिजेक्ट करना चाहिए. दे शुड रिजेक्ट द सेंसरशिप. दिस इज द assertion. And what is the reason? The reason they have said that because libraries have unlimited information. Is the reason satisfying the assertion in this particular question? Anybody who wants to give an answer? বলো যদি কারো কোনো অ্যান্সার দেওয়ার থাকে. The first statement is according to IFLA libraries must support freedom of access. So it is true, right? So IFLA के हिसाब से लाइब्रेरी को फ्रीडम ऑफ एक्सेस को सपोर्ट करना चाहिए. सो रीज़न क्या दिया गया? बिकॉज लाइब्रेरीज हैव अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन. लाइब्रेरीज के पास जो है अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है या नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू, राइट. सो वो क्या होगा, ये जो आंसर दिया गया ये शायद गलत है. इसका क्या होगा आपका? ए ट्रू होगा. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. असर्शन इज़ ट्रू, रीजन इज़ फॉल्स. ओके. Now the next question, that is, who defines censorship as the suppression of ideas and information that certain persons, individuals, groups or government officials find objectionable or dangerous? हमने बोला इसके बारे में. Who defines censorship as the suppression of ideas? किसने डिफाइन किया सेंसरशिप को एज सप्रेशन ऑफ आइडियाज? बताओ. पीपीटी में था ये. सो ALA इसका क्या आंसर आ जाएगा? ALA डिफाइन सेंसरशिप एज द सप्रेशन ऑफ आइडियाज. सिर्फ इतना याद रखना है कि ALA डिफाइन सेंसरशिप एज द सप्रेशन ऑफ आइडियाज. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डी प्लेटफॉर्मिंग? डी प्लेटफॉर्मिंग क्या है? Is it a video game? Is it a platform for casual conversation? Or is it an internet portal of US Senate? Or is it a form of internet censorship? So what is deplatforming? बताओ. Okay, so deplatforming is a form of internet censorship. हमने जब इंटरनेट सेंसरशिप के बारे में डिस्कस किया, सो इंटरनेट सेंसरशिप मैंने बोला तब कि इंटरनेट सेंसरशिप का एक फॉर्म है डीप प्लेटफॉर्मिंग. ठीक है. सो दिस विल बी द ऑप्शन, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. सो आज के लिए इतना ही है ना. मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे. टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप सब. और अगर किसी का कुछ बोलना है तो you can say or you can ask me if anybody has to say something. কারো যদি কিছু বলার থাকে, किसी को कुछ बोलना है तो मुझे बोल सकते हो अभी. कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस? Okay, so I think we can finally conclude our class today. So we'll be meeting on the next Friday at 9 p.m. Okay, so I think there will be 1 or 2 more classes in the unit 1, and then we'll be moving to the unit 2, or we'll see, or unit 5 or unit 7. Okay, for today's class, thank you for joining, and I hope you all will get benefited from this class. Okay, and we'll meet on the next Friday at 9 p.m. Till then, thank you.